Jai Swaminarayan, welcome to our e-learning classes. So today, I hope you all are fine students. So today we will discuss the first chapter of 12th standard and the subject is statistics. So as you can see, the chapter name is index number. So first of all, briefly in this chapter, we will discuss the definition and meaning of index number, characteristic of index number, uses of index number, computation of index number, base year, and so on, right? So first of all, we will discuss the definition and meaning of index number. So students, as we all know that in our daily life, we are observing so many things. We read newspaper, we watch news on our television. So from that, we can have the knowledge of price of an item, import, export, supply, demand, production of the company, population of country, birth rate, death rate, and we can notice that this such things varies continuously. That means ये सारी जो चीजें हैं वो हमें वो चेंज हमें दिखता है इसमें और वो continuously चेंज होती रहती है. And we can observe these such things from our television, also we can from our newspaper. So why it is so important to study such things? So it is important to do for our future planning. हमारे future planning के लिए इस सारी बातों का knowledge होना हमारे लिए जरूरी है. So that means तो इंडेक्स नंबर यहाँ पर यूज कैसे होता है? सो अगर हमें फ्यूचर में कोई बिजनेस स्टार्टअप करना है सो वी शुड हैव द नॉलेज ऑफ प्रोडक्शन. हम प्रोडक्शन कैसे करते हैं, उसका सप्लाई और डिमांड की क्या है, वो सब हमारी जानकारी होना जरूरी है. सो इन दिस चैप्टर द इंडेक्स नंबर, दैट मीन्स यहाँ पर इंडेक्स नंबर का हम कैसे यूज करेंगे? सो विल टेक टू वेरिएबल. हम अगर टू वेरिएबल और वेरिएबल लेते हैं सो उस वेरिएबल में प्राइस चेंजिंग कैसे आता है? That means changing in price value. If we are having two variable, so price change, the variation in the price change can be determined by these two methods. We are having two methods for finding the change in the value of the variable. The first one is method of absolute measure and second one is method of relative measure. So here for that, let us take one illustration and understand it. So here we are having 2 years 2015 and 2016 and we are having two items, wheat and rice. So here you can see that students, that price of per kg of wheat is 24 rupees in the year 2015 and price of wheat per kg in the year 2016 in 30 rupees. Similarly, rice की जो price है that is rupees 40 and in the year 2016 it is 46. So the first method we will use for finding the change in this variable, method of absolute measure. So in this method also this is called the difference measure. डिफरेंस दैट मीन्स यहाँ पर जो एब्सोल्यूट मेजर है उसमें हम ये दो प्राइस का अगर डिफरेंस लेते हैं सो वी कैन क्लियरली सी दैट देयर इज अ इंक्रीज ऑफ ₹6 इन बोथ द प्राइस. दैट मीन्स हमारी जो व्हीट की प्राइस है और राइस की प्राइस है उसमें सेम इंक्रीज आ रहा है ₹6 का इन द ईयर अकॉर्डिंग टू द ईयर 2015 एंड 2016. बट इफ वी कैन ऑब्जर्व दैट इन द ईयर 2015 व्हीट एंड राइस की जो प्राइसेस है हमारे पास इट इज चेंज. दैट इज यहाँ पर 24 रुपीज है और यहाँ पर 40 रुपीज है बट इंक्रीज इज सेम. दैट मीन्स दिस मेथड इज नॉट सुटेबल फॉर फाइंडिंग change the value in the variable. So we are having the another method that is method of relative measure. So in this measure we are having the ratio of these prices. So it is also called ratio measure. So in second method we will take the ratio of wheat price and rice price. So here we are having 2 years 2015 and 2016. So यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो ईयर हमारा 2015 है we will take it as P0 and जो ईयर 2016 है we will take as P1. So अगर हम रेशियो कंसिडर करते हैं P1 divided by P0, so that means 30 divided by 24 we will have 1.25. 1.25 and then P1 divided by P0, that means 46 divided by 40, this we will have 1.15. Okay, so now we are finding the ratio of two variable of two items according to the year 2016 and according to the year 2015.
15. Now we can see that राइस की जो वैल्यू है, राइस का जो इंक्रीज है वो रेशियो है दैट इज स्मॉलर देन व्हीट प्राइस. दैट मीन्स यहाँ पर जो व्हीट की प्राइस में जो इंक्रीज हो रहा है इट इज बिगर देन राइस प्राइस. नाउ फॉर आवर कन्वीनियंट इफ वी विल मल्टीप्लाई विथ 100 देन वी विल गेट द परसेंटेज रेशियो. दैट मीन्स अगर हम 1.25 को 100 से मल्टीप्लाई करते हैं सो वी विल गेट अवर आंसर 125. Similarly 1.15 multi 100 is equals to 1150. So students, for our convenience we are converting our data into percentage. So clearly the wheat price is 125 and rice price is 115. तो यहाँ पर जो हमने रेशियो कंसिडर किया था P1 डिवाइडेड बाय P0 दैट मीन्स 2016 और 2015 का जो प्राइस है उसका हमने रेशियो कंसिडर करके जो परसेंटेज में कन्वर्ट किया है दैट इज कॉल्ड इंडेक्स नंबर. सो शॉर्टली इंडेक्स नंबर की डेफिनेशन हमने यहाँ पर डिस्कस करी है. तो दैट मीन्स हम जो बेस ईयर लेते हैं और करंट ईयर, दैट टू थिंग्स वी हैव टू नोटेड हियर. सो बेस ईयर जो हमारा होता है वो प्रीवियस ईयर, दैट मीन्स जो फर्स्ट ईयर में हम हमारे प्राइस कंसिडर करते हैं. तो यहाँ पर हमारा बेस ईयर है 2015 एंड करंट ईयर है हमारा 2016. So according to this, now we will go for general index number. So here from this table we can find the price index number. हमारा जो index number आता है उसकी हम price index number कैसे find कर सकते हैं? So there is a one formula for finding price index number, that is price relative of wheat plus price relative of rice divided by number of items multi 100. So यहाँ पर price relative of wheat that means P1 divided by P0 that is 1.25 plus price relative of rice that is 1.15 and number of items that means here we are having two items that means divided by 2 multi 100. So अगर हम इसका computation करते हैं we will get our answer 120. that means हमारा जो price index number मिल रहा है that we are giving 120. that means we can see that जो prices की value में change आ रहा है, the increase in the values of the prices is 20%. Okay, so here we are having only two variables, but also we can find for more than two variables. So that means this formula will be converted into the general index number. So जो general index number की formula है that is summation P1i divided by P0i divided by n multi 100. जहाँ पर जो P1i है so that is a value of an item in the current year और यहाँ पर हमारा करंट ईयर है 2016 एंड जो P0i है that is value of an item in the base year. And जो n है that means number of item, clearly we can see that multiply by 100. So this is the formula for finding general index number. That means if we are having more than two variable, like suppose we have to find the variation change in the value jaggery, pulses, rice, wheat, etc. So we can use this formula for finding general index number. Not only it is limited for that, general index number is also used for economic, social and business activities. Government uses this general index number. So I hope you are getting this definition of index number. So the next topic we have to discuss in our class, that is characteristic of index number. So हमने जो definition discuss किया था same we have to write but little more change and the characteristic we will get. So now we will discuss the characteristic of index number. So index number की जो definition हमने हमारे mind में है, so उसी से हम characteristic उसकी बना सकते हैं. That means the first point we are noting here, that is unit free measure. That means हमारा जो index number है, it is unit free measure. So वो कैसे है? Let us understand this. So यहाँ पर हमने जो wheat और rice की जो दो prices ली थी, it is per kg है हमारे पास. That means wheat की भी जो price है, वो भी kg में दी गई है
है, राइस की भी जो प्राइस है इट इज पर केजी। तो अगर हम रिलेटिव मेजर फाइंड करते हैं, दैट मीन्स अगर हम रेशियो फाइंड करते हैं, सो हियर वी आर हैविंग केजी डिवाइडेड बाय केजी because we are taking ratio. So if kg will be cancelled out, so we will not have any unit. That means it is unit free measure. Index number is unit free measure because kg जो हमने unit लिया है वो cancel हो जाते हैं. Second thing, compare the change in the variable having different units. That means not only for same units, यहाँ पर हमने same unit consider किया है, लेकिन अगर हमारे units different है, that means अगर wheat के साथ अगर हम कोई दूसरे वेरिएबल और दूसरा आइटम लेते हैं, अगर उसका हमें यूनिट लीटर में मिलता है, सो ऑल्सो वी कैन कंपेयर दैट. इट इज डिफरेंट, हैविंग डिफरेंट यूनिट होंगे तो भी हम इस इंडेक्स नंबर का यूज कर सकते हैं. द थर्ड पॉइंट दैट वी हैव टू नोटेड हियर, शोइंग परसेंटेज चेंज. दैट मीन्स यहाँ पर लास्ट में जो हमने हमारी प्राइस रिलेटिव ऑफ व्हीट और प्राइस रिलेटिव ऑफ राइस का जो रिलेटिव मेजर फाइंड किया है, प्राइस इंडेक्स नंबर फाइंड किया है, उसको हम अगर 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, so we are having percentage relative measure. That means it is showing percentage change बता रहा है. Then third point is spatial average. Spatial average, about average we have already discussed in our 11th standard. So ये spatial average कैसे है? Because it is consume all the characteristic of average. Average के जितने भी criteria है वो सभी ये follow up करता है. So it is also called spatial average. And the last one is situation can be compared at two different time periods. So clearly we can see in our example we are having two different time periods, the year 2015 and the year 2016. So that means two different time periods की situation भी हम index number से compare कर सकते हैं. So here we are ended the definition of index number and characteristic of index number, and I am hoping that you all are getting. So the next point that we have to study, that is uses of index number. So for uses of index number, the first use that we all know from our theory, that index number is used for finding the variation in the price of variable. But it is not limited for that, because index number is also uses is economic, social activities के लिए भी यूज होता है इंडेक्स नंबर, इकोनॉमिक एक्टिविटीज के भी लेता है, इवन बिजनेस एक्टिविटीज के भी लिए भी इंडेक्स नंबर का यूज होता है. सो हियर वी हैव टू डिस्कस द यूजेस ऑफ इंडेक्स नंबर. सो द फर्स्ट वन इज इंडेक्स नंबर फॉर ट्रेड. सो इंडेक्स नंबर फॉर ट्रेड हमें कैसे यूजफुल है? सो इट प्रोवाइड यूजफुल गाइडेंस टू इकोनॉमिक एक्टिविटीज ऑफ बिजनेस एंड ट्रेड. दैट मीन्स हमारा जो इंडेक्स नंबर फॉर ट्रेड है वो हमें यूजफुल गाइडेंस प्रोवाइड करता है. हमारी जितनी भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज है या हमारी जितनी बिजनेस एक्टिविटीज है, अगर हमें उसे कुछ करना है, सो दिस इंडेक्स नंबर कैन बी यूजफुल फॉर दैट. Then second thing is wholesale price index number. So wholesale price index number क्या करता है? It is useful for change in general price level. That means हमारी जितने भी items है उसका जो general price level है उसमें जो daily change आता है, that we can find by wholesale price index number and take policy decision. That means after finding the wholesale price index number, जो company है they can take the policy decision. That means जो business activities जो use करती है wholesale price index number, so they can take that policy decision by using the wholesale price index number. Okay, now the third point is cost of living index number. So cost of living, that means it is useful to study to change in the cost of living of people of different section. That means हमारे country में जो different section में जितने भी people रह रहे हैं, so it is important to study the change in cost of living. That means उनका जो cost of living है that we can find by this index number. And the second point we have to note here, to devise tax policies, bonus, salary to employees. That means जो हमारी tax policies है, company अगर tax policies है और company को अगर bonus policies फाइन करनी है और सैलरी टू एम्प्लॉयज, दिस ऑल्सो कैन बी डूइंग बाय कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर. ओके, तो फोर्थ पॉइंट we have index number for human development. So here this can be useful for determine standard of living, life expectancy, level of education. That means ये वाले index number से हम standard of living का
फाइंड कर सकते हैं लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितनी है और हमारे कंट्री का लेवल ऑफ एजुकेशन कैन बी फाउंड फ्रॉम दैट. एंड द फिफ्थ वन इज इंडेक्स नंबर ऑफ नेशनल इनकम. दैट मीन्स हमारी कंट्री की जो नेशनल इनकम है वो हम इवेल्यूट कर सकते हैं. ऑल्सो वी कैन इवेल्यूट इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ आवर कंट्री एंड टू सेट टारगेट फॉर 5 years प्लानिंग. दैट मीन्स हमारा जो 5 years का प्लानिंग होता है दैट कैन बी डन बाय दिस नेशनल इनकम इंडेक्स नंबर. सो हमारी इकोनॉमिक कंडीशन भी हम इवेल्यूट कर सकते हैं और 5 years का प्लानिंग कर सकते हैं by this index number. So students, here we are ended our class and the next we will discuss in our next period. Thank you.